Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapya Hariye Dhanam Dadvapa Sadgatim Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapya Hariye Vapa Sadgatim Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapi Haraye Stanam Dadvapya Sadgatim Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapi Haraye Stanam Dadvapya Sadgatim. Mataji's Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapi Haraye Stanam Dadvapya Sadgatim Bhutana Lokabalagni Rakshasi Rudirashana Jigam Sayapi Haraye Stanam Dadvapya Sadgatim Bhutana the professional Rakshasi. So professional, we have professionals and we have amateurs. Amateurs means sometimes they get it right. Professional means they always. So Prabhupada uses the word professional Rakshasi. So Lokabalagni, who used to kill human children. Rakshasi, the she-demon. Rudira Ajana, simply hankering for blood. Jigamshaya, with the desire to kill Krishna. Being envious of Krishna and having been instructed by Kamsa. Api, still, Haraye, unto the Supreme Personality of Godhead. Stanam, her breast, Dattva, after offering, Apa, obtained, Satgatim, the most elevated position of spiritual existence. Kim, what to speak of? Puna, again, Shraddhaya, with faith. Bhaktya, by devotion. Krishnaya, unto Lord Krishna. Paramatmane, who is the Supreme Person. Yajchan,
offering Priyatamam, the dearmost, Kim, something, Nu, indeed, Rakta, those who have an affinity, Tatmatara, Krishna's affectionate mothers, offering the beloved child their breasts, Yata, exactly like. Translation: Putana was always hankering for the blood of human children. And with that desire, she came to kill Krishna. But because she offered her breast to the Lord, she attained the greatest achievement. What then is to be said of those who had natural devotion and affection for Krishna as mothers, and who offered him their breasts to suck, or offered something very dear, as a mother offers something to a child? Please repeat. Putana was always hankering for the blood of human children. And with that desire, she came to kill Krishna. But because she offered her breast to the Lord, she attained the greatest achievement. What then is to be said of those who had natural devotion and affection for Krishna as mothers, and who offered him their breasts to suck, or offered something very dear, as a mother offers something to a child? Purport by Srila Prabhupada. Putana had no affection for Krishna. Rather, she was envious and wanted to kill him. Nonetheless, because with or without knowledge she offered her breasts, she attained the highest achievement in life. But the offerings of devotees attracted to Krishna in parental love are always sincere. A mother likes to offer something to her child with affection and love. There is no question of envy. So here we can make a comparative study. If Putana could attain such an exalted position in spiritual life by neglectfully, enviously making an offering to Krishna, what is to be said of Mother Yashoda and the other gopis who served Krishna with such great affection and love, offering everything for Krishna's satisfaction? The gopis automatically achieved the highest perfection. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended the affection of the gopis, either in maternal affection or in conjugal love, as the highest perfection in life. Ramya kachid upasana vrajavadu vargena ya kalpita. अनुवाद: पूतना सदा ही मानव शिष्यों के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उसके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। तात्पर्य: पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराकर परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठा युक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया। रम्या कांचिद उपासना व्रजवधो वर्गेण वया कल्पिता। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Savana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vijakam Zvitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaprivascha Kripa Sindhu Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So, ask for the blessings of the Vaishnavas in order to offer something of use for everyone's spiritual development. So Putana was a demoniac witch instructed by Kamsa to kill Krishna. पूतना एक राक्षसी थी जिसको कंस ने आदेश दिया था भगवान कृष्ण का वध करने के लिए। She approached Krishna just like an affectionate mother. वो भगवान कृष्ण के पास एक स्नेहमयी माता के रूप में गई। And she was promoted to Vaikuntha Loka. और उसे वैकुंठ धाम मिल गया। To the position of a nurse. और वहां पे उनको एक धात्री की गति मिली। And maid servant. और एक दासी के रूप में, सेविका के रूप में। To assist Mother Yashoda. जिससे वे माता यशोदा की सहायता कर सके। So we're not demons. तो हम लोग तो असुर नहीं है। We are not trying to kill Krishna. हम कृष्ण को मारना भी नहीं चाहते। Why do not get elevated to position in the spiritual world? तो हमें कोई क्यों आध्यात्मिक जगत में कोई गति नहीं मिल जाती? So in Srimad Bhagavatam, early in the 2nd chapter, तो श्रीमद् भागवतम में शुरुआती अध्याय 2 में Suvai pumsam paro dharmo yator bhaktir doksajay ahaitakiya pratiyata yayatma suprasidati. सवै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. The supreme occupation for all men is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such service must be uninterrupted and unmotivated in order to completely satisfy the self. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि किसी भी जीव के लिए जो परम धर्म है वह भगवान की भक्तिमयी सेवा करना है और यह सेवा अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए.
Also in the Bhagavad Gita, Krishna explains in the 3rd chapter. भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी यह बताया गया है, Yagyartat karmanonyatra loko yam karma bandhana tadartam karma kauteya mukta sangha samachara. यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. कि हमारे भगवान विष्णु को यज्ञ के रूप में समर्पित करने के लिए हमें अपने कार्य करने चाहिए. Otherwise, work binds one to this material world. नहीं तो ये कर्म हमें इस भौतिक जगत में बांधने का कारण होता है. Therefore, O Arjuna, इसलिए हे अर्जुन, perform your prescribed duty for his satisfaction. आप अपने निर्धारित कर्म को भगवान की तुष्टि के लिए करिए. And therefore you will always remain unattached and free from bondage. इस प्रकार से आप हमेशा अनासक्त एवं किसी भी बंधन से मुक्त रहेंगे. So, Shri Radha, Radha Mohan, Krishna Balaram, Jagannath Baladev Subhadra, Purnita, Pramamashi. So we are still on the level of karma bandhana. तो हम अभी कर्म बंधन के स्तर पर भी नहीं है. We are attached to personal activities of either personal or extended sense gratification. तो हम अभी अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से या फिर विस्तृत इंद्रिय तृप्ति से उससे जुड़े हैं. Our mood is one of service. हमारा भाव सेवा का है. We're always serving someone or something. हम किसी न किसी प्रकार से किसी की सेवा कर ही रहे हैं. Prabhupada so often mentions. श्री प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, We may not be serving our own individual sense gratification. कि हो सकता है हम अपना व्यक्तिगत रूप से इंद्रिय तृप्ति ना कर रहे हों, But an extended one. लेकिन विस्तृत रूप से कर रहे होंगे. Especially those who are in the household ashram. विशेषकर से गृहस्थ आश्रम में One is always serving the wife or husband. लोग आपस में दंपति पति पत्नी आपस में सेवा करते रहते हैं. One is serving the children. वे बच्चों की सेवा करते हैं. One is serving the house or the garden. वो अपना घर और बगीचा की सेवा करते हैं. One is serving one's pets. अपने पालतू जानवरों की सेवा करते हैं. Practically speaking, at every moment we're engaged in some kind of service. तो वास्तव में हम हर एक क्षण किसी न किसी प्रकार की सेवा में रत हैं. Even we're not conscious of the fact. भले ही हम इस बात को गंभीरता से ना ले समझे ना. So this science of self-realization. तो ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान is to help us to recognize. यह हमें यह समझने में सहायता करता है The pushing and pulling of the material three modes. कि जो भौतिक जगत के जो तीनों गुण हैं वो हमें किस प्रकार से धक्का देते हैं और खींचते हैं. And simply observe them as a witness. और उनको हम कैसे सिर्फ एक साक्षी के रूप में देखें. And later in the 5th chapter, Nakartridvam Nakarmani Lokasya Sujati Prabhu Nakarma Pala Samyogam Swabhavas tu Pravartate. Krishna explains that the living entity mastered the city of 9 gates. भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो हमारा यह शरीर है वो 9 द्वारों का मालिक है. जीव Does not create activity. वह अपने कार्यकलापों को खुद से नहीं बनाता है. Does not induce others to act. और वह दूसरे को उसके कार्यकलाप करने के लिए भी प्रभावित नहीं करता. Nor does he create the fruits of action. न ही वो अपने कर्म फलों को बनाता है. All this is enacted by the modes of material nature. यह सब कुछ सिर्फ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है. So we're thinking we're doing so many things. तो हमको लगता है कि हम कितने सारे काम कर रहे हैं. But practically speaking, it's one of 2 things. तो लेकिन वास्तव में बोले तो हम सिर्फ 2 काम ही कर रहे हैं. एक या 2. It's devotional service. एक भक्ति in one of 3 or 4 different levels. जो कि 3 या 4 स्तर में से कोई एक पे. Ignorance, passion, goodness, or Shuddha goodness. सतो रजो
तमो या फिर शुद्ध सत्व, or selfish activities of personal or extended gratification. या फिर हम कुछ अपने व्यक्तिगत या फिर विस्तृत इंद्रिय तृप्ति का से रूप से सेवा कर रहे हैं. Sorry. So we may be officially engaged in the activities of devotion, तो औपचारिक रूप से हम भले ही भक्ति में ही सेवा में नियोजित हो, but our hearts are not into it. लेकिन हमारे हृदय अभी सेवा में नहीं लगा है. In the Srimad Bhagavatam, the examples of Putana, Shishupal and others, श्रीमद् भागवत में पूतना, शिशुपाल और अन्यों का उदाहरण है. these demons are presented ये जो राक्षस हैं हमारे सामने इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं because their hearts क्योंकि इनके हृदय were really into killing Krishna. वे कृष्ण को मारना चाहते थे. And the devotees, like the gopis, और जो गोपियां जैसे भक्त हैं, young and old, भले ही वे वृद्ध या फिर नौजवान, were simply into loving and serving Krishna. जो स्वभावतः ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम करना चाहते हैं. Practically speaking, in the first 8 chapters of the 10th canto, तो वास्तव में 10वें स्कंद के पहले 8 अध्याय, the only gopis mentioned तो जिन गोपियों का वर्णन है are the friends and associates of Mother Yashoda and the other senior ladies of Vrindavan. तो वे वरिष्ठ गोपियां हैं जो कि माता यशोदा की सहायता करती हैं. There's no mention of the young gopis. उनमें कोई भी नौ युवती गोपी का वर्णन नहीं है. So we're somewhere in between. तो इसके बीच का जो सारांश, उसके बीच हम लोग हैं. In the second canto, there's a verse that explains that only 2 people are happy in this material world. श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में ऐसा आता है कि केवल 2 तरह के लोग इस दुनिया में खुश हैं. The self-realized soul, एक तत्वदर्शी and the complete fool. और पूर्णतः मूर्ख. Everyone else is suffering बीच के miseries of material world. बीच के सारे लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं. So that's most of us right there. तो ज्यादातर हम में से लोग इसी स्तर में आते हैं. So our hearts may still be attached to personal sense enjoyment or personal benefit. तो हमारा हृदय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति या भोग से आसक्त हो सकता है. As Maharaji raised the question yesterday, we may not really be interested in full and complete devotion. जैसे माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कि हो सकता है कि हम पूरा भक्ति में समर्पित करने के लिए तैयार ना हो. So Krishna is gradually pulling us तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे हमको अपनी ओर खींचते हैं. from detachment from material considerations इस भौतिक जगत के से अनासक्त करते हुए and pushing us to attachment to his service. और हमको अपने सेवा की आसक्ति की ओर खींचते हैं. So we have a wonderful example in Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद का हमारे पास एक बढ़िया उदाहरण है. Srila Prabhupada, after he met Srila Bhakti Siddhanta, श्रील प्रभुपाद अक्सर श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के बारे में बताते थे he had a plan. कि उनकी एक योजना थी. What was the plan? वो योजना क्या थी? He wanted to become very rich. कि वो बहुत ही धनी बनना चाहते थे. And he wanted to bankroll all of the activities of the Gaudiya Math. और फिर वो चाहते थे कि ज्यादा धनी बनके सारी गौड़ी मठ को वो आर्थिक रूप से सहायता कर सके. In Calcutta, there's a lane, Sita Kanta Banerjee Lane. कलकत्ता में एक गली है सीता कांता बनर्जी की गली. And Srila Prabhupada rented 2 houses. श्रील प्रभुपाद वहां पे 2 घर किराए पे लिए थे. One was for his personal residence. एक में वो स्वयं रहते थे. And the other was for a factory for his chemicals. और दूसरे में अपने रसायनों की फैक्ट्री चलाया करते And थे. the top 2 floors उसमें जो ऊपरी की 2 मंजिल थी he offered to Srila Sridhar Maharaj and others.
उसको उन्होंने श्रील श्रीधर महाराज और अन्यों को सौंप दी, to maintain as a center for the Gaudiya Math. जिससे वहां पे गौड़ीय मठ का केंद्र बना सके। And Prabhupada was paying the rent. और श्रील प्रभुपाद उसका किराया दिया करते थे। So things didn't exactly develop as Srila Prabhupada desired. They didn't develop. लेकिन श्रील प्रभुपाद की जो इच्छा थी वैसा हुआ नहीं। It came to the point where Srila Prabhupada even had to ask the devotees for 20 rupees. तो एक ऐसा समय भी है कि श्रील प्रभुपाद को भक्तों से 20 रुपए के लिए भी पूछना पड़ता था। And we read in the book here how this one devotee still he came across the receipt because Prabhupada wanted to itemize whatever he owed. तो हमारे पास एक बुक है, उसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद को कुछ रुपए की जरूरत थी, क्योंकि वो even though he had paid the rental for months and months, वो महीनों महीनों उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। So many things didn't exactly work out. तो कई सारी योजनाएं ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं। He couldn't get his daughter married. वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पाए। One of his favorite sons उनका एक प्रिय पुत्र became a street urchin. वो सड़क पे घूमते थे। I can read this is from this book, and it's from a memory by Bhakti Sundara Dev Goswami. श्रील भक्ति सूत्र देव गोस्वामी महाराज बताते हैं, disciple of Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj, जो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के शिष्य हैं, and Acharya of the Sri Chaitanya Saraswat Math. और श्री चैतन्य सरस्वती मठ के आचार्य हैं। This is a quote. Srila Prabhupada was not so attached to his family life. श्रील प्रभुपाद अपने पारिवारिक जीवन से ज्यादा आसक्त नहीं थे। He was making all arrangements for Aartis and worship by himself in his home. वो अपने घर में आरती वगैरह की सारी व्यवस्था स्वयं ही किया करते थे। So we were mentioning yesterday that Srila Prabhupada's wife was a devotee, but her idea of devotion was just ringing the bell and offering prasad. तो हम कल श्री प्रभुपाद की पत्नी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वे भी भक्त थी, लेकिन उन भक्ति के बारे में उनकी यह ख्याल था कि भगवान को सिर्फ आरती और भोग लगाना। But we see here even Srila Prabhupada had to do that. लेकिन हम देखते हैं श्री प्रभुपाद को भी ये सब करना पड़ता था। His family was not much interested. उनका परिवार ज्यादा रुचि नहीं रखता था भक्ति में। It was his duty to maintain his family. ये उनका कर्तव्य था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करें। And he was doing that as he could. और जितना हो सकता था वे किया भी करते थे। But he was much more interested in his preaching life. लेकिन वो प्रचार करने में ज्यादा रुचि रखते थे। Quote, his family life was not a happy one. उनका पारिवारिक जीवन ज्यादा सुखद नहीं था। One son had become melancholy. एक जो पुत्र था वो बहुत दुखी हो चुका था। Like mad. कुछ पागल जैसा। This son, Prayagraj, इस पुत्र का नाम प्रयागराज was very dear to his father. वह अपने पिता को बहुत ही प्रिय था। Being exceptionally intelligent यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान था and very learned in Shastra at a young age. और शास्त्रों का प्रकांड पंडित था कम उम्र से ही। But he met one neighbor girl. लेकिन वह एक पड़ोस की लड़की। This kind of association was forbidden by Bengali society. के साथ था, लेकिन ऐसा जो संग था बंगाली समाज में मान्य नहीं था। Many years later, I came upon this son. कई सालों बाद मैं उस पुत्र से फिर मिला। When he left his family house. जब वो अपने घर को छोड़कर चले गए थे। After Prabhupada had been gone for 10 years. जब श्री प्रभुपाद चले गए थे उसके 10 साल बाद। I was on Kalan Street. और वह सड़क पे था। When suddenly I saw that Prayag was approaching me from the other side of the street.
और मैं देखा कि अचानक से वो जो प्रयाग है सामने से सड़क पे मेरी ओर ही आ रहा है। He looked like a street beggar वो सड़क के एक भिखारी की तरह दिख रहे थे and was collecting broken papers and things. और वो कुछ फटे पुराने कागज ये सब सामान इकट्ठे कर रहे थे, Putting them here and again collecting more. उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर और ज्यादा इकट्ठा कर रहे थे। For 10 years I'd had no trace of him. 10 साल तक मुझे और उनके बारे कुछ पता नहीं था। And at that time I stood in front of him. और उस समय उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। He knew me very well and said, वो मुझे बहुत भली प्रकार से जानते थे और कहे, "Oh Govindu, हे गोविंद, how are you?" आप कैसे हैं? I told him, "Where are you living now? मैंने पूछा, अभी आप कहाँ रहते हैं? How are you?" आप कैसे हैं? He said, "I'm going on, sometimes living in the Mulak house." मैं जा रहा हूँ अलग अलग जगह पे, कभी मलिक घर में रहा था। Then I walked on तब मैं आगे चला गया and saw that he was still collecting. और मैं देखा वो अभी भी वो सब इकट्ठा कर रहे थे। I was sad to see this. मैं इसको देख के बहुत ही दुखी हुआ। I stood by the side of the road for about half an hour मैं सड़क के किनारे करीब आधा घंटे तक खड़े रहा and watched him. और उनको देखता रहा What had happened to this boy who was so intelligent, कि भला इस लड़के को क्या हो गया जो इतना तीक्ष्ण बुद्धि के थे, with such a great father? इतना बढ़िया इनकी बुद्धि थी। Later at Chandrodaya Mandir, I met with Prabhupada फिर मैं श्रील प्रभुपाद से मिला किसी मंदिर में and he asked me, और उन्होंने मुझसे पूछा, "Have you seen Prayagraj anywhere?" क्या आपने प्रयागराज को कहीं भी देखा है? I told him yes मैंने कहा हाँ, and explained what had happened. और बताया कि जो भी हुआ था। Pishima was there then, पिशीमा भी वहीं पे थी उस समय and Prabhupada ordered her strongly, और श्री प्रभुपाद ने बहुत जोर से कहा, "Oh Pishima, Priyabai, you search him out, find him and take care of him. कि पिशीमा को उनका ख्याल रखने को बोला, उनका पता लगा के। You have made a vow that you would do this." और उन्होंने उनसे शपथ लेने को कहा कि आप उनका ख्याल रखेंगी। So it goes on to explain that situation in 1956. तो इस स्थिति का विवरण और भी है, 1956 में हुआ था। Srila Prabhupada told it he had the dream of his Guru Maharaj श्री प्रभुपाद ने कहा कि उनको उनके गुरु महाराज का एक स्वप्न आया था calling him to take sannyas. जिसमें उनको संन्यास लेने के लिए बुला रहे थे। He requested Sridhar Maharaj to give him sannyas. उन्होंने श्रीधर महाराज से संन्यास के लिए प्रार्थना की। I remember we were sitting in his family's house हमको याद है कि हम उनके परिवार के साथ बैठे हुए थे, discussing Guru Maharaj, Pishima, Prabhupada, myself, and also one of his sons were there. हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद, पिशीमा और उनका एक पुत्र भी वहां पे थे। Pishima told him, "You are so poor now, you cannot even maintain your family. पिशीमा ने कहा कि अभी आप इतने गरीब हैं कि अपना परिवार भी नहीं चला सकते। It would be better if you took sannyas. बढ़िया ही होगा कि आप संन्यास ले लीजिए, It would be good for you." ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। Srila Prabhupada said, "If I take sannyas, who will look after my family?" श्री प्रभुपाद ने कहा, अगर मैं संन्यास ले लूंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? Pishima said, "Well, you are looking after your family, but at the same time, you cannot look after them." पिशीमा ने कहा कि आप अपने परिवार को देख तो रहे हैं, लेकिन फिर उसी समय साथ में आप उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। So leave your family and I will take responsibility for them. कि आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। I have 5 sons who have income. मेरे पास 5 बच्चे हैं, वो सब नौकरी करते हैं। In your house, you cannot do anything to help them आप अपने घर में रह के उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं as you would like. जैसा आप चाहते हैं, And they do not want that spiritual way of life. और वे आध्यात्मिक रूप से रुझान भी नहीं रखते हैं उसको अपने जीवन में So उतारने की। why must you live there? तो इसलिए आप वहां पे क्यों रह रहे हैं? You want preaching, आप प्रचार करना चाहते हैं, so you must preach. उससे इसलिए आप प्रचार ही करिए। That is your proper life. ये आपके लिए बढ़िया जिंदगी रहेगी। So things don't exactly always turn out as we desire, but ultimately everything turns out
as Krishna desires. तो जैसा हम सोचते हैं वैसे चीजें नहीं होती, चीजें भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार होती हैं। So in the course of our lives, तो हमारे इस जीवन के अनुसार जीवन में we have to deal with the dualities. हमें द्वंद्वों से सामना करना पड़ता है। Matras parshas tu kantiya shitoshna sukha dukkada agama paino nityas tamsti tikshas bharata. Heat and cold, सर्दी गर्मी, honor and dishonor. मान असम्मान। Honor and dishonor means local community. मान सम्मान ही हमारे आसपास के समुदाय में। Fame and infamy. यश अपयश, It means honor and dishonor on a big scale. यानी कि मान सम्मान बड़े स्तर पर, Happiness, distress. सुख दुख। So all of these dualities will confront us. ये सब द्वंद है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। But the self-realized soul is not disturbed. लेकिन जो एक तत्वदर्शी व्यक्ति होता है इससे विचलित नहीं होता। And he or she carries on with their service. वह अपनी सेवा जारी रखता है irregardless. और अपना काम करता रहता So in the course of our lives, है। अपने जीवन के दौरान Krishna is giving us opportunities भगवान कृष्ण हमें अवसर देते हैं to serve with more conviction, कि जिससे हम और भी निश्चय के साथ उनकी सेवा कर सके, with more intensity, और भी ज्यादा तीव्रता के साथ। and we can either accept or reject. और भले हम उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। So this opportunity is here during Kartik Vrata और यह अवसर हमारे पास कार्तिक व्रत के रूप में है to take advantage of the auspicious atmosphere कि हम इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकें and to increase our activities और हम अपनी जो भक्तिमय सेवा है उनको उसमें बड़ा वृद्धि ला सकें, for the service of the Lord. जो भगवान और हम भगवान की सेवा कर सकें। Generally speaking, Kartik can be a wonderful time. सामान्य रूप से बोले तो कार्तिक एक बहुत बढ़िया समय है। It can be very ecstatic, ये बहुत ही आनंदमय है or it can be very agonizing. और यह बहुत ही पीड़ामय भी हो सकता है। Krishna may want to purify us. क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हमारा इसमें शुद्धिकरण हो जाए। And generally speaking, that purification is more than we had planned for. और यह शुद्धिकरण है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। But if we recognize what Krishna wants to do, हम भले समझे नहीं लेकिन भगवान कृष्ण से करना चाहते हैं and surrender, और चाहते कि हमने उनकी शरण ले, then life becomes very blissful. तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। So we should never begrudge Krishna इसलिए हमें भगवान पे कभी दोष नहीं लगाना चाहिए for insisting on our purification. कि वो हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं। Srila Prabhupada also once mentioned श्रील प्रभुपाद बताते हैं that I can take you back home, कि मैं आपको भगवत धाम ले जा सकता हूँ, but don't fight me trying to save you. लेकिन आप ऐसा मत करो कि मुझे आपको लड़ झगड़ के आपको बचा के ले जाना पड़े। So we're looking at everything from the point of view of materialistic gratification. हम भौतिक के दृष्टिकोण से सब चीजें देखते हैं। And in the third canto, Lord Kapila Dev, he mentions about the different levels or different devotional service in the different modes of material nature. तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव भक्ति अलग अलग गुणों में अलग के हिसाब से उसके बारे में बताते हैं। And as we were discussing yesterday, Krishna is looking for pure devotional service. हम जैसा कल बता रहे थे कि भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति की तलाश में है। He's not really interested, and therefore we must have the mercy of the spiritual master. इसीलिए हमें गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। When we offer our service to our guru, अपनी सेवा अपनी गुरु को देते हैं, the guru purifies it गुरु उसको शुद्ध कर देते हैं and offers it to his spiritual master. और फिर वो उसको अपने गुरु को
And अर्पित करते हैं eventually it is offered to Krishna. और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को अर्पित होती है। So we have to recognize our actual position. तो हमें अपनी जो यथास्थिति है सेवा करने की उसको समझना चाहिए। We may be somewhat confused हो सकता है कि हम कुछ संदेह में हो of our current position अपनी यथास्थिति के बारे में and recognize that we have a long way to go. और तब हम समझेंगे कि हमें अभी बहुत दूर की यात्रा करनी है। So we'll continue to hear about Putana पूतना के बारे में सुनना जारी रखेंगे and how merciful Krishna is. कि कृष्ण कितने दयालु हैं। So we should also, understand that she had to die. हमें यह भी समझना चाहिए कि पूतना को मरना भी पड़ा। Krishna had to kill her, भगवान कृष्ण को नहीं मारना पड़ा, which means she had to give up यानी कि पूतना को सब कुछ छोड़ना पड़ा, that life of sin. अपनी पापनी जिंदगी छोड़ना पड़ा। So Krishna is also killing the demons within us. तो भगवान कृष्ण हमारे अंदर के असुरों का भी नाश कर रहे हैं। And we shall enthusiastically accept और हमें उत्साहपूर्वक स्वीकार करना चाहिए His plans for our purification. उनकी योजनाओं को जिससे वे हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं। Then at the end of this life, तब इस जीवन के अंत में Krishna will reveal तब भगवान कृष्ण हमको अपने आप को प्रकट करेंगे। our spiritual identity हमारे जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको प्रकट करेंगे and our eternal service to Him. और जो हमारी उनके प्रति सेवा है उसको भी प्रकट करेंगे। So why is that? ऐसा क्यों है? Because we're still attached. क्योंकि हम अभी भी आसक्त हैं। And it's only really when we come to the last moments जब व्यक्ति जीवन के आखिरी क्षण में आता है that we realize Hare Krishna. तब उनकी आंखें खुलती हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Any comment or question? Hare Krishna. Oh, sorry. Looked like your hand was going up. All right. So we have to see Srila Prabhupada as well in his life. He had a noble idea of helping Srila Bhakti Siddhanta spread Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद के पास एक बहुत बढ़िया योजना थी जिससे वो श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की योजना में सहायता करना चाहते थे। Things looked good. और चीजें ठीक वैसे हो नहीं रही थी। When Prabhupada first started in his pharmaceutical business, जब श्रील प्रभुपाद अपना पहली फार्मेसी चालू किए, it was the sky's the limit. तो वो आसमान पे छू रही थी उसकी सफलता। And things were going well. और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। And he was trying to assist his god brothers as fully as possible. अपने गुरु भाइयों की हर संभव सहायता कर रहे थे। But then it came to the point where he had to even ask them for money. फिर एक समय ऐसा है कि उनको अपने गुरु भाइयों से रुपए मांगने पड़े। How much is 20 rupees? 20 रुपए क्या होता है? But he had to ask, he had to beg from the people he was donating to for 20 rupees. लेकिन उनको उन लोगों से भी 20 रुपए मांगने पड़ा जिसको पहले वे दान दिया करते थे। How embarrassing that must have been. यह कितना उनके लिए शर्मिंदगी पूर्ण रहा होगा। He had married and considered that he was raising a nice family. वे विवाहित थे और ऐसा माना जाता था कि वो अपना परिवार का अच्छे प्रकार से पालन पोषण करेंगे। And that family completely fell apart. और वो पूरा परिवार बिखर गया। Even by modern material standards or by the current material standards. यहाँ तक कि अभी आधुनिक जो भौतिक स्तर है उनसे भी वो बिखर गया। And Prabhupada, when Prabhupada was young, his mother जब श्री प्रभुपाद नौजवान थे, बच्चे थे, तो उनकी माता had told Gaur Mahande
और उनके पिता गौर मोहनडे, Prabhupada's father, श्री प्रभुपाद के पिता, that if he didn't get his daughter married, Prabhupada's sister, वो उनकी माता ने कहा था कि यदि वो श्री प्रभुपाद की बहन को विवाहित नहीं कर पाते, she was 12 years old, जो कि 12 साल की थी उस समय, Prabhupada's mother said she would kill herself. तो प्रभुपाद की माता ने कहा था कि वो खुद को मार डालेंगी. So Prabhupada's daughter was like 15. और प्रभुपाद की बेटी 15 साल की थी. Of course, it's nothing like now, but still, the young people didn't want to get married to whoever their parents selected. तो अभी के समय में ये उम्र ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पहले उस समय काफी उम्र हो गई थी. So many things materially didn't appear very nice. तो बहुत सारी चीजें जो भौतिक रूप से ठीक नहीं दिखती थी. But spiritually, what did Srila Prabhupada do? लेकिन आध्यात्मिक रूप से श्री प्रभुपाद ने क्या कुछ नहीं किया. He conquered the whole world. उन्होंने पूरा दुनिया को जीत लिया. Even when he arrived in New York, जब वे न्यूयॉर्क में गए, after the 2 weeks in Pennsylvania, पेंसिल्वेनिया में 2 हफ्ते के बाद, he spent 1 year, 1 साल वो बिताए, and he described it as loitering in the street. और वहां पे वो सड़क पे भटकते हुए उनका वर्णन आता है. Trying to understand the American situation and the American people. क्योंकि वो उस समय अमेरिका की स्थिति और अमेरिका के लोगों को समझना चाहते थे, परखना चाहते थे. And continuously praying for the mercy of his spiritual master. और लगातार अपने गुरु महाराज की कृपा की याचना कर रहे थे. And then gradually success became visible. और उसके बाद कालांतर में उनकी सफलता सबको दिखने लगी. So, and the rest is history. और बाकी सब इतिहास है. That's what Srila Prabhupada accomplished, and what he continues to accomplish. तो श्रील प्रभुपाद ने जो भी पाया वह सब एक इतिहास है, और अभी भी वो सब पा ही रहे हैं, हासिल कर रहे हैं. By his sincere followers. अपने निष्ठावान अनुयायियों के माध्यम से. So he asked us to work together cooperatively. उन्होंने हम सबको एक साथ मिलजुल के सेवा करने के लिए कहा है. We gave the example of that one devotee. और उन्होंने हमें उस भक्त के उदाहरण भी दिया. He quoted Srila Prabhupada as saying, उन्होंने श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया, when I see my disciples, कि जब मैं अपने शिष्यों को देखता हूँ, I see that none of them have my qualities. मैं देखता हूँ कि उनमें से किसी के पास भी मेरे गुण नहीं है. But when I see a group of them together, लेकिन जब मैं अपने भक्तों का समूह देखता हूँ, शिष्यों का, some of my qualities are definitely there. तो मेरे कुछ गुण निश्चित रूप से उनमें विद्यमान हैं. Therefore, I have hope तो इसलिए मुझे आशा है that this movement will go on. कि यह आंदोलन चलता रहेगा. Therefore, your love for me, इसलिए आपका जो प्रेम है मेरे प्रति, will be shown by how you cooperate. तब प्रदर्शित होगा कि जब आप लोग ये दिखाएंगे कि आप किस तरह मिलजुल के सेवा करते हैं. To keep and push on this movement. इस आंदोलन को बना के रखने और आगे ले जाने के लिए. So sometimes we're stuck in this idea. तो कभी कभी हम इस विचार पे आके रुक जाते हैं that it all depends on me. कि क्या सब कुछ मुझ पे ही निर्भर है. But it all depends on us. लेकिन ये सब कुछ हम पर निर्भर है. And the lack of the us, और ये जो हमारी जो कमी है, is because we won't work together. कि हम साथ मिलकर काम नहीं करते. So someone has to come forward. तो किसी ना किसी को सामने आना है. And understand the importance of working together. और साथ में मिलके सेवा करने की महत्ता को समझना है. That person was His Holiness Bhakti True Swami. और ऐसे व्यक्तियों में से हैं श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज. He embodied that understanding. वह इस समझ का प्रतिनिधित्व करते थे that for Iskcon to succeed, कि यदि इस्कॉन सफल रहे, locally or internationally,
अंतर्राष्ट्रीय रूप से या फिर स्थानीय रूप से We have to appreciate one another हमें एक दूसरे की सराहना करनी है and understand how important each and every one of us is और यह समझना कि हम में से हर एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है to strengthening and pushing on this movement. जिससे यह आंदोलन आगे ले जा सके और इसको और मजबूत किया जा सके On one level, strength and expansion are the same. तो एक स्तर पर इसको मजबूत करना दृढ़ करना और इसको विस्तार करना एक ही बात है It's like your muscles. जैसे आप अपनी मांसपेशियों को देखें Of course, my muscles are no example. But when your muscles build, then they expand. जब भी आपकी मांसपेशियां बढ़िया बनती हैं तो विस्तार भी करती हैं So when the Krishna conscious movement expands, तो जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़ता है it becomes stronger. तो ये और मजबूत हो जाता है When it's built on the principle of cooperation. और यह आपस में एक दूसरे के सहयोग के सिद्धांत पर ही निर्मित है When I was approved, not really approved, but I was given no objection to becoming a spiritual master. जब मुझे गुरु बनने की अनुमति मिल गई थी I asked my god brother Bhakti Chaitanya Swami मैंने श्रीमद् भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज से पूछा if he thought I could do this. कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं गुरु बन सकता हूँ And he mentioned that it's all about acknowledgement and appreciation. तो और उन्होंने ये बताया कि इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना आभार व्यक्त करते हैं और कितना सराहना करते हैं The AA. AA In America, the Alcoholics Anonymous is the AA. अमेरिका में अज्ञात शराबियों को AA कहा जाता है But in Krishna consciousness, we should look at everyone whenever we see them and acknowledge their existence. तो कृष्ण भावनामृत में लेकिन हम जब भी किसी को देखें तो हमें उनका जो अस्तित्व है उसके प्रति उनका आभार प्रकट करना चाहिए And appreciate their contribution. और उनका जो योगदान है उसकी सराहना करनी चाहिए Then things will grow. तब सारी चीजें बढ़िया रूप से चलती रहेंगी In the material world, which is based on enviousness, ये भौतिक जगत जो कि ईर्ष्या पर आधारित है it's just the opposite. पूरी तरीके से विपरीत है So we're contaminated by materialistic consciousness. हम लोग भौतिक दूषण से उसका कलमश हम पे लगा है Well, we should try to change that. हमें इसको बदलने का प्रयास करना चाहिए Isaac Newton, आइजैक न्यूटन the famous scientist, काफी विख्यात वैज्ञानिक he wrote many books. उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी Actually, when he was writing books, there was no such thing as science. जिस समय वो पुस्तकें लिखा करते थे उस समय विज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं थी He was a philosopher. वे एक दार्शनिक थे And he mentioned, of course, his idea of the 3 laws of motion और उन्होंने गति के 3 नियम बताए and various other ideas that he discovered. और भी कई सारे नियम जिसकी उन्होंने खोज की People used to praise him. लोग उनको काफी सम्मान देते थे And he said 2 things. और उन्हें 2 चीजें कही He said, what knowledge do I have? उन्होंने कहा मेरे पास क्या ज्ञान है I've only collected a few grains of sand मैंने सिर्फ ये तो मान लो धूल के 2-4 कण उठा लिए हैं from the big beach. एक बड़े समुद्र के किनारे से 2-4 रेत के कण उठाए मैंने They also said, if I've seen anything, वास्तव में मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा है it is because I've stood on the shoulders of giants. ये इसलिए क्योंकि मैं बड़े बड़े उनके कंधे पे बैठा हूँ Yes. So that's humility. तो यह उनकी विनम्रता है And that's the only way things grow. तो यही प्रकार है जिससे चीजें आगे बढ़ती हैं It's the only way a person comes to knowledge. इस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान की ओर आता है So that is what our spiritual lives are based on.
तो इसलिए मेहनत करिए, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है वो इस पर आधारित है, on being humble servants. हमारी विनम्र सेवा पर। And we have the legacy of His Holiness Bhakti True Swami, हमारे पास श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का विरासत है। who was such a wonderful servant of all devotees. वो सारे भक्तों के कितने अद्भुत सेवक थे। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanandi. Hare Bol.